अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग मुगलाई चिकन बना रहे हैं। मुगलाई चिकन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आसान भी है। नवाब्स किचन के स्टाइल में आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं देखते हैं। बहुत सारे लोगों की फेवरेट रेसिपी मुगलाई चिकन आज हम लोग बना रहे हैं। उसको मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए पहले हम लोग चिकन लेंगे। चिकन मैरिनेशन के लिए रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसमें कर्ड भी ऐड करेंगे। चिकन मैरिनेशन के लिए रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसमें कर्ड भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो पहले ही प्रिपेयर करे हुए फ्राइड ऑनियंस इसमें ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन को अच्छी तरह मिक्स करे बाद इसको एक 15 मिनट तक हम लोग मैरिनेशन के लिए रखेंगे। मुगलाई चिकन की खासियत उसके मसालों में रहती है। वो मसाला प्रिपेयर करने के लिए पहले हम लोग आलमंड्स को रोस्ट करेंगे। आलमंड्स के साथ साथ हम लोग इसमें थोड़े से कोरिएंडर सीड्स भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा और काली मिर्ची भी ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन सीड्स, नेचुरल स्पाइसीनेस के लिए हम लोग इसमें ड्राई रेड चिली भी ऐड करेंगे और स्लाइटली रोस्ट करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स स्लाइटली रोस्ट हो गए बाद हम लोग इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। मुगलाई चिकन के प्रोसेस में मेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बाउल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग जो पहले ही फ्राइड ऑनियंस फ्राई करके रखे थे उसी ऑयल को यूज करेंगे। ऑयल के साथ साथ हम लोग इसमें प्योर घी भी ऐड करेंगे। ऑयल और घी अच्छी तरह गर्म हो गए बाद हम लोग इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे।
घी और तेल में चिकन अच्छी तरह बॉईल होने के लिए हम लोग इसको 20 मिनट तक पकने देंगे। मैरिनेटेड चिकन अच्छी तरह पके बाद हम लोग इसमें जो पहले ही हम लोग रोस्ट करके रखे थे उसी आलमंड्स का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट रेसिपी परफेक्टली बन गया है। फाइनली इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पाइसीनेस ऐड करने के लिए स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। माशाल्लाह, रेसिपी तो परफेक्टली बन गया है और बहुत ही मजेदार है। आप भी अपने घर पे कोशिश करिए। उससे पहले हम लोग इसको पैक करेंगे और नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
का ये मुगलाई चिकन देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए। हम लोग के फेसबुक पेज पे भी फॉलो करिए, उस पे भी ढेर सारे रेसिपीज आपके लिए अवेलेबल है। और हम लोग के वेबसाइट www.nawabskitchen.org पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए, हम लोग आप तक पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफ़िज़।